is beginning to feel the ripple effects of the widening West Asia conflict with disruptions in the supply of commercial LPG cylinders used by restaurants, hotel and food businesses. As News9 has been continuously reporting, the impact is already visible in major cities including Bengaluru, Mumbai and Chennai, where eateries rely heavily on commercial cooking gas to run their kitchens. Authorities have prioritized domestic LPG for households, tightening supplies for commercial establishments in several areas. To manage the situation, the government has revised the priority order for natural gas allocation, putting LPG production, CNG and piped cooking gas at the top of the list. Oil refineries have also been directed to ramp up LPG production, while a panel of oil marketing company officials have been set up to review supply requests from hotels and other industries. Now, here are some ground reports of the situation in Noida and Mumbai. Have a look. भोपाल में सुबह से ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर को लेकर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपको भोपाल के टीटी नगर की दिखा रहे हैं। सुबह सुबह का समय है, मगर अभी से आप देख लीजिए कि कितनी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। ये देखिए, तकरीबन 40 से 50 लोग आपको इस कतार में दिखाई देंगे और ये सुबह का समय है और धीरे धीरे ये कतार जो है वो अब बढ़ने भी लगेगी। तो कल से इसकी शुरुआत हुई है। जैसे ही सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर को बैन किया है, उसके बाद से लोग जो है उन्हें कहीं ना कहीं चिंता हो रही है कि सिलेंडर मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इसी के चलते जो है वो लोग अब इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए पहुंच रहे हैं। आपसे बातचीत करते हैं, क्यों सुबह से आप लगे, क्या आप घर पर अब डिलीवरी नहीं हो रही है? सर, अभी घर पर ये फ़ोन नहीं उठा रहे हैं डिलीवरी के लिए, तो घर पे आने की संभावना ख़त्म हो चुकी है, इसीलिए आकर लाइन में लगना पड़ रही है। ठीक है, आप बताएं क्या दिक्कत आ रही है? वैसे तो हम सामान्य तौर पर मिस कॉल देते हैं या बुक कर देते हैं, इस बार नहीं हो रहा है क्या? वो बोल रहे हैं कि ओटीपी नहीं आ रहा है, मतलब हमारे पास ओटीपी आ ही नहीं रहा है फ़ोन पे, और बोल रहे हैं कि 1 महीने के बाद ही आपके पास ओटीपी आएगा। लंबी कतारें यहाँ पर आप देख रहे हैं, लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है और लोगों से हमने बातचीत की है। उन्होंने यही बताया है कि किसी का सिलेंडर 10 फरवरी को ख़त्म हो गया था, किसी का 11 फरवरी को, और तब से बुक किया हुआ है, मगर अब नई गाइडलाइन आई है, उसके हिसाब से 25 दिन काउंट किए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर हमने 1 महीने पहले से बुक किया हुआ है तो फिर आज हमें सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा? अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध छिड़ चुका है और युद्ध को छिड़े 10 दिन से ज़्यादा होने वाला है, जिसका सीधा असर पड़ोसी देशों पर भी पड़ रहा है और जहां पर ईंधन की सप्लाई में रुकावट आ गई है। मैं इस वक्त दिल्ली के मोती महल रेस्टोरेंट की किचन में मौजूद हूं, जहां पर 24 घंटे जो गैस है वो जलती रहती है। जो आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये जो गैस सिलेंडर है जो पायलट है, यानी कि इसे पायलट कहते हैं, इस पायलट के जरिए ये दिखाया जाता है कि इससे माचिस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, ये 24 घंटे जलती है। लेकिन चूंकि ईंधन की क्राइसिस ज़्यादा है, इसलिए अब इस पायलट को भी ये लोग बंद कर रहे हैं। और मोती महल का जो खास तौर से व्यंजन है वो है आपका दाल मखनी, और दाल मखनी चूंकि बहुत लो फ्लेम पे बनती है और ज़्यादा समय लेती है, तो अब धीरे धीरे इस दाल मखनी को पकने में भी आने वाले समय में दिक्कत शुरू हो जाएगी। Well, the crisis continues to escalate in India as well. LPG shortage is now affecting the hospitality sector first. Hotels and restaurants are raising alarms over mass closures. And meanwhile, hotels in Telangana have urged the state government to grant the hospitality sector essential service status amid a worsening commercial LPG shortage. The appeal comes from the Telangana State Hotels Association, which has warned that the ongoing gas supply disruption could force several restaurants and eateries to shut down temporarily. In a letter dated March 10, the association wrote to the state's civil supplies minister seeking urgent government intervention to restore the supply of commercial LPG cylinders. The association has requested the government to classify hotels and restaurants as essential service establishment, which would allow them to receive priority access to LPG cylinders similar to domestic consumers.
Industry representatives say that the shortage has already begun, affecting operations across parts of Telangana, following similar concerns raised earlier in neighbouring Karnataka. The hospitality sector has warned that if the LPG supply crisis continues, it could trigger mass closures of restaurants, leaving thousands of workers unemployed. The association also pointed out that hotels and eateries play a crucial role in the state's economy and tourism sector, while providing daily meals to migrant labourers, students and working professionals. According to the industry body, prolonged restrictions on commercial LPG supply could severely disrupt food services across cities and towns in the state. The Hotel Association has now urged the government to step in quickly and ensure priority LPG supply for the hospitality sector, warning that delays could push many small establishments to the brink of closure. And now India's energy security is under the spotlight as the West Asia conflict and the tensions around the Strait of Hormuz begin to affect global supplies of oil, LPG and natural gas. Oil prices briefly surged with Brent crude touching $120 a barrel before easing below the $90 mark. For India, the stakes are significant. We import nearly 90% of its crude oil, while more than 60% of LPG demand and over half of LNG requirements are met through imports, much of it from the Gulf region. To cushion the impact, India has been increasing purchases of discounted Russian crude, with Russia remaining the country's largest supplier in recent months. Officials say that India now sources crude from around 40 countries, widening its supply base to reduce dependence on a single maritime choke point. The country also holds more than 250 million barrels of crude and petroleum products, enough to cover 7 to 8 weeks of demand. For now, the government says that petrol and diesel prices are unlikely to rise immediately despite global volatility. But the immediate pressure is being felt in LPG supplies, for which new emergency measures are in place, including boosting LPG production, revising gas allocation priorities and extending the waiting period for LPG refill bookings to prevent hoarding. Meanwhile, India is exploring alternative LPG supply routes from countries including the United States, Algeria, Norway and Canada, as it works to stabilize supplies amid a rapidly evolving geopolitical crisis. There is absolutely no shortage of fuel. More details are being worked out. There is a serious war going on. I think everybody knows about it. The people are seeing it on television. You are showing it relentlessly. And in this situation of war, there will be concerns which will be appraised, which will be made known to everybody from time to time by the relevant department.